जय जगन्नाथ पिला माने। तो आज आम टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 3 को डिस्कशन करबा। तो डेरी न करी चलंतु स्टार्ट करबा। एग्जाम तो पाखक को आसलानी, शीघ्र शीघ्र सब स्टार्ट करबा, क्वेश्चन गुडी को डिस्कशन कर दबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन टा हला जे if you are irritated and show rashness because of the inadequate behavior of another teacher, what do you think about your own behavior? माने एठी से तुमको कहिछि गोटे टीचर हिसाब रे तमे imagine करो जे if you are irritated and show rashness because of the inadequate behavior of another teacher, गोटे अन्य टीचर रो बिहेवियर जोगु तमे जदि माने खराब कथा कहउछ, कटु कथा कहउछ, तमे तमरो बिहेवियर को केमिति कहइबो? फर्स्ट ऑप्शन हला जे it is justified because behaviors are equally. Next, B number hela your behavior is not good because elders have the right to behave you in this way. Next, your behavior is also a sign of maladjustment and so try to control yourself when you are maltreated. And all of this. तो जदि तमे माने सेमिति टीचरंकर बिहेवियर रे गोटे अलगा टाइप रो बिहेवियर शो करूछ तो एटा हला हमर ही प्रॉब्लम। तो आंसर है जीवो सी, जोटा है जीवो योर बिहेवियर इज आल्सो ए साइन ऑफ माल एडजस्टमेंट बिकॉज तमे माने ही एडजस्ट करि पारुनो एंड सो ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ, निजो को कंट्रोल करिया पे ट्राई करिवा कथा। नेक्स्ट हला टीचर शुड कीप हिज वॉइस इन द क्लास। टीचर वॉइस क्लास से पढ़ेबा टाइम रे केमिति हबा कथा? हाई एनफ टू बी हर्ड बाय एवरी स्टूडेंट क्लियरली, लाउड सो दैट एवरीवन कैन हियर क्लियरली, मॉडरेट और समटाइम लो समटाइम हाई। तो केमिति हबा कथा? हाई तो हबा कथा किंतु सब बेले जदि हाई आ लाउड हबो, चिल्ले चिल्ले कि जदि जण टीचर तो सब बेले पढौथबो सेटा इरिटेट मध्ये लागिबो। तो सेति पई आंसर कोन हिजबो? समटाइम लो एंड समटाइम हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट टीचर एंड टीचिंग? एमानक मध्ये the first option hella teachers should have control over the students to maintain peace and order in the class. Then second option, teaching should be pupil centered rather than subject centered. C hella teachers should arouse interest among students about the subject. Then hella all of this. तो से कहिछि एमानक मध्यरु कोटा टीचिंग रिलेटेड रे ठीक बोली कहिछि। तो टीचर शुड हैव कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। तो स्टूडेंट माननकु टीचर कंट्रोल करि पारुथबा कथा पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करिवा पई। नेक्स्ट हमर हे गला टीचिंग शुड बी प्यूपिल सेंटर्ड एंड rather than subject center। तो सब्जेक्ट सेंटर न हे कि स्टूडेंट सेंटर हबा कथा, एटा भी ठीक अछि। देन टीचिंग शुड arouse interest among students about the subject। तो टीचर जो सब्जेक्ट रो इंटरेस्ट टा स्टूडेंट मानक प्रति जगै पारुथबा कथा, एटा भी ठीक अछि। तो कोडा पर ऑप्शन टा ठीक हे जबो, तीनटा जाक ठीक हे गला, ऑल ऑफ दिस सब जाक ठीक हे जबो। तो आंसर देखि दम हमें कोन अछि ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट हला 44 नंबर ए टीचर लर्न्स मैक्सिमम फ्रॉम। तो टीचर टा मैक्सिमम काहा ठारो शिक्षा ग्रहण करिथांती? ये तो प्रिंसिपल को ठारो तो जहा जहा नीति नियम शिखिबे, बुक्स रो मध्ये शिखिबे, स्टूडेंट रो भी मध्ये शिखिबे, नोन ऑफ दिस। तो एथरे कोन हे जीवो आंसर टा? टीचर काहा ठारो शिखिले तांकर शिक्षादान पद्धति को ठीक से मॉडिफाई करि परिबे। से जति एटा हे जीवो आंसर टा हमर स्टूडेंट कोन पाए ना, से जति स्टूडेंट तो शिखिले तो जहाँ भी स्टूडेंट रो डाउट रहला कौन रहला केमिति स्टूडेंट माने बुझी पारुचंती, को वे रे पढेले बुझुचंती, से सेटा को जानि कि ताको क्लासरूम रे पढ़ी पारिबे। सो दैट से सबुठ अधिका कोर्स शिखि जानती स्टूडेंट थारु। देन हमर 45 नंबर क्वेश्चन हला टीचर्स यूज टीचिंग एड्स फॉर। टीचर कौन पाए टीचिंग एड्स यूज करन?
making teaching interesting, making teaching with understanding level of students, making student attentive, and the sake of its use. कोउथिपाई यूज करते जदि आमको टीचिंग लेवल टीचिंग एड्स देकी पढ़ा होची तो कौन होता है छुआ माने इजीली बुझी पारि थांती इंटरेस्टिंग तो हबो इंटरेस्टिंग हेले से माने सुनिबे सुनिबा द्वारा से माने कौन करिवे बुझिबे तो हमर ऑप्शन बी टा हिजबो करेक्ट जोटा हेगला मेकिंग टीचिंग विथ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्शन बी टा हिजबो हमर करेक्ट 46 हला who propounded the understanding level of teaching तो ये तो हमर आंसर टा दे दिया हिची ये एचसी मोरिसन से हमर कोन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का देथिले रिफ्लेक्टिव लेवल के थिले रिफ्लेक्टिव लेवल टा देथिले हमर ह्यूंट अब हमर जो मेमोरी लेवल कहूचु सेटा देथिले हबर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Which teaching maxim suggests introducing the topic's overview before of its part? को टीचिंग हमको कही थाए जे टीचिंग मैक्सिम गुडी को हमें पढ़ीचु तो कोटा कहे जे इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक्स ओवरव्यू बिफोर इट्स पार्ट टॉपिक्स रो फर्स्ट ओवरव्यू दिया जिवो देन पार्ट्स बाय पार्ट्स पढ़िबा from simple to complex ना from concrete to abstract ना from whole to part ना from indefinite to definite तो तार क्वेश्चन रे ही हमर आंसर पळे आउची जेमिति इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक्स ओवरव्यू बिफोर इट्स पार्ट तो कोन हिबो आंसर टा फ्रॉम होल टू पार्ट फर्स्ट रो गोटे सब्जेक्ट रो ओवरव्यू दिया जिवो देन हमें तार पार्ट बाय पार्ट डिटेल्स रे पढ़िबा तो ऑप्शन सी टा हेगला हमर करेक्ट नेक्स्ट असला हमर how does non-formal education differ from formal education non-formal education टी formal education रो differ केमती कहिछि तो फर्स्ट ऑप्शन हेगला हमर इट इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज एटा तो हबनी देन इट फॉलोज a set of syllabus and structured evaluation non-formal education रे गोटे set of syllabus और structured evaluation करा जाए कि करा जाएनी then it does not take place in traditional classroom and is more flexible एटा हे पारे नेक्स्ट लास्ट टा देखि देबा इट इज डिलीवर्ड बाय सर्टिफाइड टीचर्स ओनली तो ये चारिटा भितरु जोटा हमर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हे जिवो नॉन फॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन भितरे फॉर्मल टा कोन हमर गोटे क्लासरूम सेटअप रे दिया माने डिलीवर करा जोची नॉन फॉर्मल पाई क्लासरूम सेटअप रो किबा ट्रेडिशनल स्कूल्स रो किछि आवश्यकता नै जेते बेले चाहिबे स्टूडेंट माने सेते बेले पढ़ी परिबे तो एटा गला फ्लेक्सिबल तो it does not takes place in traditional schools and is more flexible तो ऑप्शन नंबर सी टा हमर हेजबो करेक्ट नेक्स्ट देखिबा हमें 49 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर मनकर कैरेक्टरिस्टिक्स गुडी को कोन they are highly dependent on instructors they dislike practical application they are autonomous and self directed and they easily accept change कोडा ही जिवो they are highly dependent on instructor एटा तो हबनी highly dependent के थाए जो छोटे छुआ गुडी को थांती से माने ही थांती एडल्ट लर्नर माने नीचे नीचे सब पाठ पढ़ंती तो जेहेतु निजे पाठ पढ़ंती तो सेल्फ डायरेक्टेड टा करेक्ट हे जिवो they are autonomous and self directed तो ऑप्शन नंबर सी टा हमर हेजबो करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हला which level of the affective domain demonstrates a willingness to change one's behavior तो एमानक मध्यरो को affective domain रो को जिंसटा willingness to change one's behavior सेटा को दर्शाउछि receiving ना responding ना ऑर्गेनाइजेशन ना कैरेक्टराइजेशन कोड आइज आंसर
तो हम देखिदबा हमर रिसीव माने से रिसीव कला। नेक्स्ट हमर रेस्पोंडिंग जहाँ भी रिसीव करूची ताकू से रेस्पोंडिंग करिवो। देन से जहाँ भी रेस्पोंड कला ताकू ऑर्गेनाइजिंग करिवो आ सेटा तार बिहेवियर रे परिवर्तन करिया पई आनिबो जोटा कि हेगला हमर कैरेक्टराइजेशन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट जोटा हला कैरेक्टराइजेशन। नेक्स्ट हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। एमानक मध्यरु कोउटा गोटे फॉर्मल एजुकेशन रो एग्जांपल बोली से पचारिछि। सेल्फ लर्निंग फ्रॉम बुक ना ट्रेनिंग रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स ना लर्निंग थ्रू ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स विदाउट सर्टिफिकेशन ना एक्वायरिंग ए कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री। फॉर्मल एजुकेशन कहिछि। फॉर्मल एजुकेशन रे हमर कोन कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री आसी जिवो। तो हमर ऑप्शन डी टा हिजिवो करेक्ट। नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द रोल ऑफ ए टीचर इन द एंड्रागोजिकल मॉडल। टीचर रो रोल टा कोन एंड्रागोजिकल मॉडल रे से पचारिछि। फर्स्ट हला कंट्रोलिंग द पेस ऑफ लर्निंग ना एज्यूमिंग फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट इज लर्नड ना फैसिलिटेटिंग लर्निंग ना इवैल्यूएटिंग द लर्निंग प्रोसेस। कोटा करेक्ट हिजिवो। एंड्रागोजिकल मॉडल रे टीचर काम कौन से गोटे गाइड हिसाब रे काम करिवो। से जो हमर पाठ पढ़ाटा को फैसिलिटेट करिवो। तो एटा कोथरे अछि हमर ऑप्शन नंबर सी जोटा हला फैसिलिटेटिंग लर्निंग। नेक्स्ट आसिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एमानक मध्यरु कोटा नॉन फॉर्मल एजुकेशन को दर्शाउछि। तो ये जो क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन रो ऑप्शन गुडी को हला जे टू प्रोवाइड डिग्री प्रोग्राम्स in university, to offer structured education with rigid evaluation criteria, to teach basic literacy or job related skills outside the formal school system, or to eliminate need for any learning method। तो एमानक मध्यरु कोटा नॉन फॉर्मल एजुकेशन रो गोटे पर्पस बोली कहिछि। टू प्रोवाइड डिग्री प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी एटा तो फॉर्मल रे पळे आसीबो। देन टू ऑफर स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन स्ट्रक्चर भी जदि पळे आसला एटा फॉर्मल पळे आसीबो। देन टू टीच बेसिक लिटरेसी और जॉब रिलेटेड स्किल्स आउटसाइड द फॉर्मल स्कूल सिस्टम। एटा हेई पारे डी नंबर टा देखितबा टू एलिमिनेट द नीड फॉर एनी लर्निंग मेथड्स एटा भी हबनी। तो को आंसर कोडा हमर ठीक हे गला आंसर ऑप्शन नंबर सी जोटा हे गला हमर टू टीच बेसिक लिटरेसी और जॉब रिलेटेड स्किल्स आउटसाइड द फॉर्मल स्कूल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हला वन सेकेंड। तो हमरो क्वेश्चन टा हला जे ए फार्मर लर्न्स modern irrigation technique by watching YouTube videos, so it is an example of। तो गोटे फार्मर टे से कौन करछि ना यूट्यूब रे देखि देखि सब केमिति कौन चाष करा हुए से विषय रे शिखिछि। तो एटा को से पचारछि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ एजुकेशन। एटा फॉर्मल ना नॉन फॉर्मल ना इनफॉर्मल ना टेक्निकल एजुकेशन पचारिछि। तो फार्मर टा शिखिछि यूट्यूब रो शिखिछि एटा फ्लेक्सिबल वे रे से शिखिछि जते बेले इच्छा से शिखि परिबो। तो फॉर्मल तो हबनी नॉन फॉर्मल भी हबनी कारण नॉन फॉर्मल कोन जोड़ा डिस्टेंस एजुकेशन हमरे देले थे सेटा सब नॉन फॉर्मल पळे आसीबो। तो कोटा हिजिबो हमरो सही आंसर सी जोटा हिजिबो इनफॉर्मल एजुकेशन। फार्मर टा जदि यूट्यूब वीडियो देखि करी गोटे जिंस शिखुछि इनफॉर्मल एजुकेशन। जदि किए बॉयज न गर्ल्स हॉस्टल को गला हॉस्टल रे से जाइकी कुकिंग रिलेटेड वीडियो देखिला कुकिंग शिखिबा पई एटा को टाइप रो एजुकेशन हिजिबो एटा भी हिजिबो इनफॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर लर्निंग डिफरेंस बिटवीन एडोलेसेंट लर्नर्स एंड एडल्ट लर्नर।
तो एडोलेसेंट और एडल्ट लर्नर मध्य फरक कौन पचारिछि। तो ऑप्शन ए है एडोलेसेंट लर्नर प्राइमरीली लर्न थ्रू intrinsic motivation while adult through extrinsic. Now adult learners apply prior experience in learning, whereas adolescent learner have limited prior experience. C number tala adolescent prefer self-directed learning more than adults. D hela adults learn best through rote memorization while adolescent require experiential learning. तो जो एडोलेसेंट लर्नर प्राइमरीली थ्रू इंट्रिंसिक एटा तो भूल हो ये जो हमर एडल्ट लर्नर बेस्ट थ्रू रोट मेमोराइजेशन एटा भी भूल हो से तला एडोलेसेंट प्रिफर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मोर देन एडल्ट एटा भी भूल हो तो हमर कोटा ठीक हो बी नंबरटा ठीक हो जोटा कहला जे एडल्ट्स लर्नर अप्लाई प्रायर एक्सपीरियंसेस इन लर्निंग जहाँ भी सेमानकर पूर्व एक्सपीरियंस अच्छी सेटा लर्निंग रे यूज करती व्हेरेस एडोलेसेंट मानक पाखरे कोन कम प्रायर एक्सपीरियंस थाए तो बी हिजबो करेक्ट। नेक्स्ट हला व्हाट डज द एप्लीकेशन लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व। तो हमरो जो कॉग्निटिव डोमेन रो एप्लीकेशन लेवल टा कोटा से पचारिछि। रिकॉलिंग information ना understanding meaning ना converting abstract knowledge into practice ना breaking down communication। एप्लीकेशन लेवल जो आमर एफेक्टिव साइकोमोटर कॉग्निटिव जो तीनटा डोमेन रही तो सेथिरु से पचारिछि कोड एप्लीकेशन पार्ट कॉग्निटिव डोमेन रे बोली कहिछि। कोटा हिजिबो हमर सी नंबर हिजिबो हमर करेक्ट जोटा केला कन्वर्टिंग abstract knowledge into practice। नेक्स्ट देखिबा what are the intervening variables in the teaching process। हमर टीचिंग पढ़िला बेले इंटरवेनिंग वेरिएबल गुड़िक कौन जोटा कि हमर पाठ पढ़ा को इफेक्ट पके पारे। हम तो डिपेंडेबल वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जानिछु डिपेंडेंट हेगला स्टूडेंट और इंडिपेंडेंट हेगला टीचर। इंटरवेनिंग कौन कौन हेजिबो हमर आसीबो जहा करिकुलम हेगला मेथड को शैली रे पढ़ा होची कौन पढ़ा होची को एनवायरनमेंट रे पढ़ा होची तो ऑप्शन देखि दबा कौन कौन देछि टीचर एंड स्टूडेंट एटा तो हबनी एटा तो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट रे जिवो। फिलोसॉफी एंड ह्यूमन नेचर सी हला कंटेंट ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग एनवायरनमेंट एटा हेई पारे। नेक्स्ट देखिया पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड रिलीजियस फैक्टर। मोस्ट कन्वीनियंट जोटा हबार चांसेस अच्छी सेटा हेगला सी जोटा हला कंटेंट ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग एनवायरनमेंट तो हमर ऑप्शन सी टा हिजिबो करेक्ट। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इन एजुकेशन माने एजुकेशन टा को प्रोसेस बोली सी कहिछि। जॉन डीवी कोन कहिथिले जे एजुकेशन इज ट्राइपोलर प्रोसेस तो ट्राइपोलर हिजबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आसला हाउ डू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इन्फ्लुएंसेस एजुकेशनल एम। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो रहिछि सेटा केमति हमर एजुकेशनल एम को इफेक्ट करूछि बोली से पचारिछि। ए नंबर हला पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैव नो इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एटा तो भूल हिजबो। नेक्स्ट एजुकेशनल एम्स आर सोलली डिटरमाइंड बाय फिलोसॉफिकल फैक्टर। आमे एमिति कहि परिबा कि जे ओनली फिलोसॉफिकल फैक्टर ऊपर ही एजुकेशनल एम डिटरमाइन करे कहि परिबानी। आहुरी मध्ये बहुत सारा साइकोलॉजिकल फैक्टर रहिछि आहुरी बहुत सारा फैक्टर रहिछि जहा ऊपर हमर एजुकेशनल एम टा डिपेंड करे। सोशल फैक्टर फिलोसॉफिकल साइकोलॉजिकल बहुत फैक्टर रहिछि। नेक्स्ट सी हला एजुकेशनल एम्स इन डेमोक्रेटिक सिस्टम differs from those in autocratic system। तो से कहला जो हमर डेमोक्रेटिक जो गणतांत्रिक जो सिस्टम रहिछि सेथरे एजुकेशनल एम डिफर फ्रॉम दोज इन ऑटोक्रेटिक सिस्टम कहिछि। देखिबा एडा होछि ना नहीं। देन रिलीजियस फैक्टर आर द प्राइमरी इन्फ्लुएंस।
से कहिछि जो रिलीजियस फैक्टर गुड़िक रही सेटा प्राइमरीली इन्फ्लुएंस करे आमर जो एजुकेशनल एम को कहिछि आम तो सब धर्मटा सब आमर एजुकेशनल एम को डिफर करुछि कि करूनी तो ये जोटा करेक्ट हो सी एजुकेशनल एम गोटे गणतांत्रिक राज्य आ गोटे ऑटोक्रेटिक सिस्टम रे एजुकेशनल एम गुड़िक डिफरेंट नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ गुड डाइट एंड न्यूट्रिशन ऑन लर्निंग तो आम भल खाइबा पोषण युक्त खाद्य खाइबा कौन पर लर्निंग रे जरूरी बोली से पचारिछि देन देखिदबा ऑप्शन गुड़िक एनालिसिस करिबा गुड डाइट एंड न्यूट्रिशन आर एसेंशियल फॉर गुड फिजिकल हेल्थ एंड बेटर लर्निंग एटा हे पारे नेक्स्ट ऑप्शन गुड़िक देखिदबा डाइट एंड न्यूट्रिशन हैव नो इफेक्ट ऑन लर्निंग एटा तो आम कहि परिबानी जदि जणे भल खाद्य न खाउची सुषम खाद्य न खाउची ता देह जदि खराब हबो से कौन पाठ पढ़ी पारिबो पारिबोनी ओनली फिजिकल हेल्थ इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग चिल्ड्रेन खाली कौन फिजिकल हेल्थ जल्दी गोटे छुआटे सुस्थ सबल देखा जाଉଛି କିନ୍ତୁ मेंटली से स्ट्रांग नहीं आम ताको गोटे डेवलप स्टूडेंट खाली सेटा दरकार कि नुह नेक्स्ट ब्रेन सेल्स कंज्यूम वेरी लिटिल ग्लूकोज एटा भी हबनी तो हमर ऑप्शन एटा ही जिवो करेक्ट तो एठी हमर आंसर एटा करेक्ट हे गला नेक्स्ट देखिबा हम 61 व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन पेडागोजी एंड एंड्रागोजी पेडागोजी और एंड्रागोजी भितर डिफरेंस कौन से पचारिछि तो देखिदबा आंसर गुडी गुडी एनालिसिस करदबा पेडागोजी फोकसेस ऑन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग व्हाइल एंड्रागोजी इज इंस्ट्रक्टर सेंटर तो पेडागोजी ता मु कहि दउछि तम माननकु पेडागोजी कोन जोटा हला हमर आर्ट ऑफ टीचिंग आ एंड्रागोजी हला एडल्ट सेंटर्ड जो थरे कि हमर एडल्ट मानकर बेसी रोल रही थाए माने से माने निजे निजे पढ़ी थांती आ पेडागोजी रे कोन से माने टीचर ऊपर बेसी माने डिपेंडेंट थांती तो से ताको भाबी कि तमे आंसर गुडी को एनालिसिस करो पेडागोजी फोकस ऑन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एठी ही तो भूल ही गला एंड्रागोजी फोकस ऑन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग नॉट पेडागोजी then pedagogy is instructor centered and controls the pace of learning while andragogy is learner centered and promotes self directed learning तो एटा हमें देखिबा एटा में भी हे पारे देन हमर रहला जे both models are equally effective for all types of learner तो दुईटा जाक मॉडल कोन इफेक्टिव फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर कहिछि एटा तो भूल हे जिवो नेक्स्ट एंड्रागोजी इज सुइटेबल फॉर चिल्ड्रन एंड्रागोजी हम कोन कहले सेल्फ पेस्ड लर्निंग बा सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग निजे निजे जो पढ़िबाटा चिल्ड्रन माने कोन निजे निजे पढ़ी थांती पढ़ी न थांती तो पेडागोजी इज सुइटेबल फॉर चिल्ड्रन नॉट एंड्रागोजी तो को ऑप्शन टा रहला हमर बी ऑप्शन टा रहला पेडागोजी इज इंस्ट्रक्टर सेंटर एंड कंट्रोल द पेस ऑफ लर्निंग पेडागोजी टा हमर कोन इंस्ट्रक्टर सेंटर जोटे टीचर जहा पढ़ेबे छुआ माने सेटा सुनबे और टीचर पाखरे पावर थाए से पेस ऑफ लर्निंग को कंट्रोल करिवो व्हाइल एंड्रागोजी इज लर्नर सेंटर एंड प्रमोट्स सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड्रागोजी टा कोन लर्नर सेंटर आ इथरे सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग टा हेता निजे निजे समाने पढ़थांती तो हमर ऑप्शन बी हिजबो करेक्ट नेक्स्ट हे गला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी पर मैसेजेस कैन ओनली बी सीन एमानक मध्यरु कोटा एमिति गोटे इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी जो थेरे मेसेज टा खाली देखि हबो सुनी हबनी कि वीडियो किछि नथिबो तो लैंग्वेज लैब्स रे तो ऑडियो टा थाए रेडियो सेट रे भी हमें सुनी थाउ टेलीविजन रे हम कोन करथाउ देखि थाउ ता संगे संगे सुनी थाउ बट एमिति कोटा जिनस जो थरे खाली मेसेज ता सीन हबो देखा जिवो पोस्टर जो हमर पोस्टर गुडी को थाए सेथरे कोन जहा भी थाए सेटा हमर कोन हमें देखि थाओ ता विषय बुझी थाओ तो पोस्टर हिजबो हमर करेक्ट आंसर सी हिजबो करेक्ट नेक्स्ट हला व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ यूजिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज इन टीचिंग एमानक मध्यरु कोटा
एमानक मध्यरु कोटा गोटे की बेनिफिट इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज टा टीचिंग रे यूज करिबार बोली पचारिछि। मोटिवेटिंग लर्नर्स ना मेकिंग टीचिंग मेथड सेल्फ सपोर्टिंग ना complicating the learning process ना reducing retention of information। तो आम जब तल आड़ देखी देखी आसवा रिड्यूसिंग रिटेंशन ऑफ इनफॉरमेशन एटा तो भूल हो जदि इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी यूज करा से इनक्रीज करिवो रिटेंशन रेट को माने गोटे टीएलएम यूज कले हम क्लासरूम रे स्टूडेंट माने ताकू देखिके अधिका जिनिस बुझी परिबे और अधिका दिन पर्यंत ताकू मने रखि परिबे। तो एटा कटिगला हमर कॉम्प्लिकेटिंग लर्निंग प्रोसेस एटा भी हबनी बिकॉज टीचिंग तो कॉम्प्लिकेटेड तो हबनी ना इजियर हब बरम मेकिंग टीचिंग मेथड सेल्फ सपोर्टिंग एटा भी हबनी। तो आंसर कौन हो हमर ए मोटिवेटिंग लर्नर्स हो हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आसला दुईटा स्टेटमेंट दीची पचारिछि। फर्स्ट स्टेटमेंट हला द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज टू डेवलप रेशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट। तो मेमोरी लेवल टीचिंग टा रेशनल और क्रिटिकल थिंकिंग टा डेवलप करे स्टूडेंट्स बोली कहिछि। और स्टेटमेंट 2 हला द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज द एबिलिटी टू डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग अमंग स्टूडेंट्स। तो मेमोरी लेवल टा कौन जस्ट लोअर लेवल ऑफ टीचिंग एथिरे तो स्टूडेंट मानकर रेशनल किंबा जहाँ भी क्रिटिकल लेवल तो डेवलप हबनी। तो स्टेटमेंट 1 टा कौन हो भूल हो। स्टेटमेंट 2 कौन कहिछि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज द एबिलिटी टू डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग अमंग स्टूडेंट। रिफ्लेक्टिव लेवल हम कौन जानछो हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव लेवल ऑफ थिंकिंग जो थरे से माने निजे निजे थिंकिंग करि परिबे। तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग ता हमर ठीक हे जिवो निजे डिसीजन नै परिबे एटा भी ठीक हे जिवो। तो हमरे कौन हो गला स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ए ऑप्शन टा कोठी अछि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जोटा सेटा हे जिवो करेक्ट। नेक्स्ट देखिबा व्हिच लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसीडर्ड द मोस्ट थॉटफुल एंड प्रॉब्लम सेंट्रिक। एमाननको मध्यरु कोटा मेमोरी लेवल ना अंडरस्टैंडिंग ना रिफ्लेक्टिव ना एप्लीकेशन लेवल को लेवल टा थॉटफुल और प्रॉब्लम सेंट्रिक प्रॉब्लम टाको से फोकस करबा सॉल्व करिया। तो मेमोरी लेवल ता हला सबुठु लोएस्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग रे किछि किछि से जिंस बुझी पारिबो किंतु रिफ्लेक्टिव टा हला कोन मोस्ट थॉटफुल आ सेत्र प्रॉब्लम को केमती सॉल्व करा जिवो ताको फोकस करहबो। तो ऑप्शन नंबर सी हो गला हमरो करेक्ट। 66 हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स। एमानको मध्यरो कोटा नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स बोली से पचारिछि। तो require a specific power supply shown with a projector, easy availability ना used during training programs। non projected projected को सिना हमरे power supply दरकार तो एटा भूल गला shown with a projector एटा non projected एथिरे projector तो किछि आवश्यकता नहीं। non projected टा easy availability एटा ठीक हे पारे जे easily एटा available हे जाय पारे। then used during training program seminar and workshop एटा मध्ये projected। तो ऑप्शन सी टा हिजिबो करेक्ट जोटा नॉन प्रोजेक्टेड एड्स विजुअल एड्स को जोटा होला हम स्टूडेंट माने को सपोज हमें प्लांट विषय रे पढिया पे चाहूचु फ्लावर विषय रे पढिया पे चाहूचु सेटा कोन इजीली अवेलेबल हो जाय तो हमर सी हिजिबो करेक्ट। नेक्स्ट देखिबा हमें व्हिच टीचिंग मेथड while fostering collaborative learning faces hurdles related to resource allocation and subject specific applicability। तो एमाननको मध्यरु को मेथड टा हमें जदी इम्प्लीमेंट करिया पे चाहूचु बहुत सारा हर्डल्स फेस करबा को पड़े रिसोर्स अवेलेबल नथांती बोली से पचारिछि। फर्स्ट हला टीम टीचिंग मेथड ना सिमुलेशन ना सेमिनार ना ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल तो हिजबा आराम से
सेमिनार मध्य हो जाए, सिमुलेशन मध्य हो जाए। किंतु हमर जो टीम टीचिंग मेथड थाए, दीटा टीचर तांकर समान समान मेंटालिटी हवा दरकार, पढ़िबार फ्लो जणे गोटे जिनस पढ़ौथुबो आ जणे फिर ताको कैच करके आ गोटे जिनस पढ़ौथुबो। एमिति कोलाबोरेटिव लर्निंग टा ए टाइप रो रिसोर्स मिलवाटा कष्ट। तो हमर ऑप्शन ए हिजबो करेक्ट, जोटा के हला टीम टीचिंग मेथड। नेक्स्ट 68 हला, in the landscape of instructional methodologies, which method balances the need for broad content coverage with the limitation of student engagement, requiring the instructor to bridge this gap? ଏଥିରୁ ଟିକେ क्वेश्चन ଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ which method balances the need for broad content coverage, ଅଧିକ content coverage କରିପାରିବ। तार लिमिटेशन कौन जो स्टूडेंट एंगेजमेंट ठीक से ही पारिबे नहीं, स्टूडेंट को से ठीक से एंगेज करि परिबोनी, सो दैट एटा हिजबो कोन टीचर सेंटर, रिक्वायरिंग द इंस्ट्रक्टर टू ब्रिज दिस गैप। तो टीचर सेंटर जदि हे गला, आ ब्रॉड कंटेंट अधिक जिंस कम टाइम रे अधिक जिंस पढ़िबार अछि, तो को जिंसटा हिजबो हमरो ग्रुप डिस्कशन तो हबनी, एटा स्टूडेंट सेंटर, लेक्चर मेथड हे पारे, रोल प्लेइंग मध्य हबनी, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हबनी। तो बेसिक कंटेंट जदि पढ़िबार अछि कम समय मध्य बिना स्टूडेंट एंगेजमेंट रे, तो बी हिजबो करेक्ट, बी लेक्चर मेथड हिजबो हमर करेक्ट। Which of the following is considered an advantage of using brainstorming in a training or educational setting? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା advantage brainstorming ର ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ତ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଟିକେ analysis କରିଦବା। It requires extensive preparation and resource. It encourages creativity, helping trainer to produce, think and explore ideas. It limits participant to only a few experienced individual. Then it focuses on evaluating existing ideas rather than generating new ones. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग रो जो ट्रेनिंग किंबा एजुकेशनल सेटिंग रे कौन फायदा तार, इट एनकरेजेस क्रिएटिविटी को एनकरेज करिवो सबले ब्रेनस्टॉर्मिंग टा, हेल्पिंग ट्रेनर टू प्रोड्यूस, थिंक एंड एक्सप्लोर आइडिया। समाने नुआ नुआ क्रिएटिव आइडिया जनरेट कर परिबे, थिंक करि परिबे, आ लिंक क्रिएट करि परिबे, आइडियाज एक्सप्लोर कर परिबे। तो बी हिजबो हमरो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमरो 70 रो तो आंसर टा बाहरी पड़िछि, जोटा होइछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली कंट्रास्ट टीचर सेंटर एंड लर्नर सेंटर। तो हमरो आंसर कोन दैछि जे टीचर सेंटर मेथड फोकस ऑन नॉलेज ट्रांसमिशन, while learner center method emphasize active learning and collaboration. तो टीचर सेंटर रे सबले हमें नॉलेज ट्रांसमिशन को फोकस करि थाउ, बट लर्नर रे स्टूडेंट माने एक्टिवली पार्टिसिपेट करंती आ एक्टिवली लर्न करंती थ्रू कोलैबोरेशन मेथड द्वारा। तो हमर सरीला 70 टा क्वेश्चन हमें डिस्कशन हमर सरी गला। नेक्स्ट क्लास रे 30 टा क्वेश्चन डिस्कशन कर दबा, जोटा प्रीवियस ईयर रे आसीछि। एमती तमरा 100 टा क्वेश्चन एमसीक्यू सरी जिवो, याको तमे माने भलो से प्रैक्टिस करो। जदि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिया पई चाहूचो, डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे जाइछि, वेबसाइट रे जाइकि लिंक रे चेक करि परिबो, मॉक टेस्ट गुडी को प्रैक्टिस करिबो। ओके, थैंक यू एवरीवन।